Welcome all to our YouTube channel Gyan Academy. So I will be discussing plus 2 class physics with you. If you remember, in previous class we discussed about permittivity and relative permittivity. And in this class, I will be discussing the numericals problem related to this, or I will be discussing it from a board point of view, and also I will be discussing it from a competition point of view. इसके बाद हम जाएंगे, we will discuss about the electric field intensity due to distributed charge. Obviously, it is a uniformly distributed charge. तो अभी तक हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और अगर आपको याद हो, वी रेड अबाउट द कूलम्स लॉ. देयर वाज वन बेसिक assumption in कूलम्स लॉ कि the force between two charged particles it will be equivalent to this only when this Q1 and Q2 they are the point charges. So we assume them to be point charges. We will discuss that what actually are the point charges. And after this, we will move on to discuss the electric field intensity due to different intensities, due to different entities. For example, we will discuss electric field intensity due to rod. We will discuss electric field intensity due to a semicircle. We will also discuss the electric field intensity due to a quarter circle. We will also try to generalize for circular shapes. And after this, we will also discuss it for the ring. We will discuss that how the electric field intensity, we know it is represented by E, how the electric field intensity, it is due to the axis of, it is on to a axis which passes through the center of a ring. तो जैसे मेरे पास अगर ये रिंग है तो इसके सेंटर में से अगर मैं एक्सिस पास करूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा. एंड आफ्टर दिस वी विल आल्सो डिस्कस that how electric field intensity is distributed due to a rod, but it is not along the axis, but it is perpendicular to the axis. It will be somewhat like this. Suppose I have a rod of length L. So I want to find the electric field intensity at this particular point. ठीक है. तो ये पहले वाले केस से कैसे डिफरेंट है. जैसे पहले वाले केस में we were to calculate electric field intensity on to this point. But in this case, we are finding at a point which is perpendicular to this. So this is a very important topic from board point of view and also from the competition point of view. So I think you all will be very attentive. So with this, we will start with our next lecture. So welcome all. So let's start. So even though we have discussed about permittivity and relative permittivity in the last class, पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद ए कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता था कि इफ देयर आर टू चार्जेस kept in any medium at any distance r, तो force in between them it will be k times q1 q2 by r square. तो यही कह रहा था हमारा कूलम्स लॉ. एंड अभी तक हमने सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए ही कंसिडर किया है, और इसी लिए हम k का जो वैल्यू है वी वर कंसिडरिंग इट टू बी 10 raised to power 9 into 10 raised to power 9. और अगर हम k को स्प्लिट करके लिखें, इट इज इक्वलेंट टू 1 by 4 pi epsilon. So this epsilon it is known as permittivity. Now, instead of using water, if we have another medium, suppose say I am putting this charges, in water,
तो क्या फोर्सेस दोनों में सेम होगी चार्जेस में जो एयर में उन्होंने एक्सपीरियंस की है? नो, इट विल नॉट बी सेम, बिकॉज even the water molecule will try to disturb the forces which are acting between two charges. ठीक है? So because of presence of water, the force it will not be same. So how much the force it will be? Force it will be equivalent to 4 pi permittivity of the water into Q1 by Q2 divided by R square. R square is the distance and Q1 and Q2 is the magnitude of the respective charges. And this epsilon W, it is the permittivity. And we know for water it is 10 raised to power minus 10 coulomb per न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो अगर हम वाटर और एयर की परमिटिविटी थोड़ी सी कंपेयर करें तो एयर के लिए इट वाज इक्विवेलेंट टू, और वी वर राइटिंग इट विद नॉट, 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आई कैन इजीली मेक आउट कि जो वाटर की परमिटिविटी है इट इज लार्जर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर. पर एट द सेम टाइम इफ आई कंपेयर द फोर्सेस experienced by this two, forces experienced by the charges in water, they are lesser than the forces experienced by the charges in the air. So can I write it like this? Like for water, it is equivalent to, so we will also try to drive this, but I want you to, for the time being, I want you to remember this formula. Ki our permittivity for a medium, it is inversely proportional to the forces experienced by the charges in that medium. इसका बड़ा इजी सा प्रूव है. उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं. द अदर थिंग इज द रिलेटिव परमिटिविटी. वी विल बी डूइंग दिस, पर उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी. तो एज यू हैव सीन कि जो परमिटिविटी का वैल्यू है आइदर फॉर एयर और फॉर वाटर, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट? अब कौन ये पावर से याद रखेगा एंड कौन हु विल रिमेंबर दिस ऑल डिजिट्स? एंड फॉर वाटर इट इज अगेन लाइक दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम, व्हाट scientists did, they defined a term called relative permittivity. अगर मैं डेफिनेशन दूं relative permittivity का, तो relative permittivity for a medium, it is equivalent to the permittivity of that medium with respect to permittivity of air. ठीक है? अब आप कहेंगे भी इसका फायदा क्या है? पहले ही हम तो फंसे हुए थे दुविधा में, इतनी मुश्किल वैल्यू याद रखनी थी, अब फिर एक और रेशियो आ गया, तो ये सारे एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ? सो आई विल शो यू द बेनिफिट ऑफ दिस. तो अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की कैलकुलेट करूं बाय डिवाइडिंग दिस टू, इट विल बी रफली इक्विवेलेंट टू 81. तो अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द परमिटिविटी, what is the permittivity of water, I will say it is a difficult thing to answer, but I know the permittivity of vacuum or air, which is equivalent to this, and I know the relative permittivity of water with respect to air, which is this. So directly if I have to calculate permittivity of water, what I can do is I can multiply the relative permittivity with the permittivity of the air. तो इस केस में मुझे सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है, एयर या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी है, आई नीड टू रिमेंबर ओनली दिस,
And if I know the relative permittivity, I can easily calculate the permittivity of that medium. Okay? You can easily see I can calculate permittivity of water if I know relative permittivity and I know permittivity of the air. तो ऐसे how we are having an edges कि we are able to remember this and we can easily remember this because this is a single digit. It will be a whole number. Either it will be 1 or it will be 2. It will be a natural number, not exactly a whole number. It will either it can be 3 and it will go on like this. तो अगर मैं इसका और थोड़ा सा एग्जांपल दूं जो हमारा डेली यूसेज में जो हम ऑयल यूज करते हैं उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज 64 टाइम्स, दैट इज 64. तो इट मींस अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज permittivity of oil, I will say that I know relative permittivity and I know the permittivity for air or vacuum. I can easily calculate the permittivity for this. I will multiply the relative permittivity with this. I easily know the value for this. ठीक है. अब अगर आपको याद हो, I said you this thing. The permittivity of a medium, I will call it to be medium. Medium कुछ भी हो सकता है. Medium can be water, it can be oil, or it can be gasoline. It is again a form of oil. Yeah, anything it can be a medium in which the charges they can be placed. So I said you this. It is equivalent to this, right? I said you this. Now, if we have to prove this thing, it is very easy to do so. So I will start with two charges. One is Q1 and other is Q2. I have kept them at a distance R, say in air. ठीक है, तो मैंने एयर में रख दिया. I know what will be the force on this. It will be 1 by 4 pi epsilon naught, which is permittivity of the air, into Q1 by Q2 divided by R square. ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, I took the charges out of the air and I kept them in water and I kept all other conditions same. Like I placed these two charges at exactly same distance as they were in air. The only difference is now there is water present between these two charges. ठीक है, तो अगर अब मैं इन दोनों के बीच में फॉर दिस केस इफ आई सी द फोर्स, I will call it as force in water. It will be equivalent to 1 by 4 pi permittivity of water into Q1. चार्जेस तो सेम ही है और मैंने डिस्टेंस भी सेम रखा, तो दिस टर्म it is exactly similar to this term, right? So now what I do is, and other thing, like I'm using a nomenclature. I'm putting naught with the epsilon. I'm putting naught with the permittivity. Same I will do for the forces. I will put a naught for the forces. So I call this to be 1 and I call this to be 2. ठीक है, तो मैंने उसे 1 नाम दे दिया और 2 नाम दे दिया. तो now if I divide 1 by 2, let's see what I get. I will get F naught divided by F water. It is equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught divided by 1 by 4 pi epsilon m, and these two terms they will cancel out. तो मेरे पास सिर्फ ये बचा. आई एम लेफ्ट विद F naught by FW is equivalent to permittivity of medium, और यहां पे हमारा water था, तो आई विल राइट इट एज water.
परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो अब आप मुझे कहेंगे भी सर ये तो टर्म जानी जानी सी लग रही है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो आई विल से दिस इज the relative permittivity. I will represent with epsilon r. This is relative permittivity of water with respect to air. तो एक तो चलिए जो हमने कहा था कि फोर्सेस एंड परमिटिविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ना फोर्स ऊपर है, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर मैं सारी इक्वेशन को देखूं तो फोर्स ऊपर है, फोर्स ड्यू टू फोर्स इन एयर वो ऊपर की साइड है, और परमिटिविटी ऑफ द एयर दैट इज डाउन साइड, तो इट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सेम फोर्स इन वाटर, इट इज इन द डिनोमिनेटर, but permittivity of water it is in the numerator. So I will say the forces, they are inversely proportional to permittivity. तो what does this statement means? ये बहुत बड़ा statement दे दिया हमने. It means that medium with higher permittivity will have lower forces between the charges, ठीक है। ये हमेशा बात रखिएगा, मीडियम विद हायर परमिटिविटी विल हैव लोअर फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। एक तो ये चीज हमने इससे कंक्लूड कर ली, और दूसरी जो हमने अब ये सारा जो इक्वेशन है इट इज इक्वलेंट टू एप्सिलॉन आर। आई होप इट इज विजिबल, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मूव इट अपसाइड इन केस इट इज नॉट। जस्ट ए सेकेंड, या नाउ इट्स परफेक्ट। तो ये जो सारा हमारा इक्वेशन है आई विल रीराइट इट। तो एफ नॉट बाय एफ डब्ल्यू it is equivalent to permittivity of water by permittivity of air, it is equivalent to epsilon r, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि परमिटिविटी कैलकुलेट करो, अगर मैं आपको कहूं कि रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करो, आप कहेंगे भी सर देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इट। वन इज, या तो हमें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे दीजिए, या तो हमें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे दीजिए, और परमिटिविटी ऑफ द एयर हमें ऑलरेडी नोन है। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिलेटिव परमिटिविटी बाय यूजिंग दिस रेशियो। और आप ये तो एक तरीका हो गया उसे कैलकुलेट करने का, रिलेटिव परमिटिविटी को। और यहां आप मुझे कहेंगे भी सर आप हमें फोर्सेस बता दीजिए जो एयर या वैक्यूम में लग रही हैं, और या जब मैं सेम चार्जेस को किसी मीडियम में रख रहा हूं तब लग रही है। तो आप मुझे कहेंगे भी सर परमिटिविटी जो है इट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्सेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्सेस इन द मीडियम, ठीक है। तो एक ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। So this is how we calculate the relative permittivity for a medium. Now we can have a very simple numericals on this. We will start with the numericals which can be asked in the board exams. So I will try to be descriptive, but I will try to solve them quickly. अब जैसे मान लीजिए मुझे ये न्यूमेरिकल है, आई विल नंबर इट एज 1। तो इट सेज दैट वी हैव टू चार्जेस, वन इज Q1 एंड अदर इज Q2। तो दे वर इनिशियली केप्ट इन एयर at a distance r, and afterwards the same charges they were shifted to water, ठीक है। तो वाटर के लिए हम ब्लू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्लू मीन्स द चार्जेस दे आर प्लेस्ड इन वाटर, और डिस्टेंस हमने एग्जैक्टली सेम रखा r,
ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव परमिटिविटी। इसे वाटर कह लीजिए और मीडियम कह लीजिए। आई विल ट्राई टू कीप इट एज ए मीडियम। तो वी हैव केप्ट इट इन ए मीडियम। ठीक है, अब मीडियम को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के लिए तो वी ऑलरेडी नो द रिलेटिव परमिटिविटी, तो किसी और मीडियम का एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक। तो आप कहेंगे सर वी मीडियम के लिए वी वी हैव नो इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट नो अबाउट अबाउट द परमिटिविटी ऑफ दिस। हमें मीडियम का परमिटिविटी नहीं पता। हाँ, एयर का पता है, वी नो ऑलरेडी नो फॉर दिस। हाउ वी कैन कैलकुलेट परमिटिविटी? आई विल से दैट आई हैव ए कंडीशन कि जब तो एयर में थे, इन दोनों में जो फोर्सेस थी इट वॉज एफ, पर जब जैसे ही मैंने मीडियम में रख दिए तो इसमें जो फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए। ठीक है, अब फोर्सेस कौन सी? अगर तो ये लाइक चार्जेस हैं, अगर तो ये लाइक चार्जेस हैं, दे विल टेंड टू रिपेल ईच अदर। मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो दे विल टेंड टू रिपेल ईच अदर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर इन दिस डायरेक्शन। दोनों केसेस में फोर्स क्या है? एफ। और जब मैंने इन्हें किसी मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, सेम वही, या तो दे विल ट्राई टू repel each other if they are like charges, positive positive, or they will try to attract each other। तो दोनों में से एक ही केस होगा ना। तो we know the forces। एक टाइम पे फोर्सेस F एंड एट अदर टाइम द फोर्सेस F/2। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस ऑफ एयर। तो आई नो द फोर्स फॉर एयर, इट विल बी F0। I know the formula by Coulomb's law because they are point charges into Q1 by Q2 divided by R square। ओके, और ऐसे ही अगर मैं मीडियम के लिए कैलकुलेट करूं, तो मीडियम के लिए आई एम रिप्रेजेंटिंग विद M। फॉर मीडियम इट विल बी 4 पाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम into Q1 Q2 by R square। So I will name this to be my equation 1 and I can name this to be my equation 2। Now if I divide 1 with 2, I get F naught by Fm is equivalent to 1 by 4 pi epsilon naught divided by 1 by 4 pi epsilon m, और ये टर्म हमारा कैंसल आउट हो गया। So it is easy to make out। So it will be equivalent to epsilon m will go upside and epsilon naught it will come downside। ठीक है, अब आपको थोड़ा जानना जानना सा लग रहा है। आप कहेंगे सर ये तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के इक्वलेंट हो गया, विच इज इक्वलेंट टू फोर्स इन एयर by force in medium। तो I will say yes, we already know the force in medium। ठीक है, हमें फोर्स इन मीडियम ऑलरेडी पता है, सॉरी फोर्स इन एयर ऑलरेडी पता है। वी टुक इट एज F एंड फोर्स इन मीडियम इट वाज F/2। ठीक है, तो इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट दिस, my 2 it will go upside, it will be like F/1 into 2 by F। F and F it will cancel out, so my relative permittivity it will be equivalent to 2। तो देखिए सीधी सी एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी n है दो मीडियम्स के बीच में, देन फोर्सेस रेशियो it will also be n। What does it mean is that force experienced by the charges in the medium, it will be force experienced by them in the air or vacuum divided by n, and n is the relative permittivity।
इसका फायदा क्या है कि अगर मैं आपको कहूं कि आई हैव ए मीडियम which has a relative permittivity of 64, I ask you that what force with respect to air it will experience. तो मैंने कहा भी हमारे पास एक मीडियम है फॉर विच द रिलेटिव परमिटिविटी is 64. ठीक है, अब मैंने दो चार्जेस को इस मीडियम में रखा, तो what will be the forces experienced by these two charges? You will say, sir, we can calculate it directly. It will be equivalent to whatever the force they are experiencing in air divided by 64. So this will be the straight answer. Okay. With this, we will move to our second numerical. तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से बढ़ाते हैं कि अब हमारे पास सेम दो चार्जेस थे, Q1 and Q2. तो they were kept at a distance of r in air. ठीक है, तो उस टाइम पे जो उन दोनों में फोर्सेस एक्ट कर रहा था, इट वाज F. बट नाउ व्हाट आई डिड, आई टुक दिस चार्जेस and I transfer them to another medium. The charges are same. I transferred them to another medium. पर अब जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, I made it half. ठीक है, मैंने डिस्टेंस है जो दोनों के बीच में वो हाफ कर दिया. तो नाउ डिस्टेंस इज r/2. अब अगर डिस्टेंस कम हुआ है तो फोर्सेस डेफिनेटली दे विल इंक्रीज, बट बिकॉज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम it will also play a role. We cannot be that much sure about forces कि it will always decrease. अब सॉरी, it will always increase. ठीक है, क्योंकि अब आप कहेंगे सर हमने तो डिस्टेंस उनमें बढ़ा दिया था, सॉरी कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली जो फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज फोर्सेस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. आई विल से बेटा थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो हमने सिर्फ डिस्टेंस कम किया है. व्हाट अबाउट द परमिटिविटी? परमिटिविटी भी तो अपना रोल प्ले करेगा ना. क्या पता परमिटिविटी इतना डोमिनेंस में हो कि इवन दो वी आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, फोर्सेस बढ़ने की बजाय दे गेट रिड्यूस्ड. दिस कैन हैपन. तो यही हुआ है. अब मान लीजिए मेरे पास पहले फोर्स F थी, but when I kept in a medium, even though at a half of the distance, the forces they become 1/4. Okay, so again we will use a same approach. Our F naught, it will be 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by r square. And our, so I think the problem it is clear to you. ठीक है, तो अब सेकेंड केस में व्हेन वी शिफ्टेड इट टू मीडियम, माय फोर्सेस बिटवीन मीडियम, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद FM. दिस इज परमिटिविटी फॉर द मीडियम. तो इट विल बी Q1 by Q2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया है, तो इट विल बी इक्वलेंट टू दिस. थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व कर दें हम, इट विल बी 1/4 pi epsilon n into, so this will be r square by 4, so 4 will go upside, it will be 4 Q1 Q2 by r square. ठीक है, तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. I know when they were kept in air, the forces between them they were F, but when I kept them in medium, the forces they become F/4. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें. तो अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड माय इक्वेशन नंबर 1 with the equation 2. What I have is F naught by Fm. It will be equivalent to
जब हम पहले इस टर्म को डिवाइड करते हैं विच हैज परमिटिविटी इन इट, तो जब वी विल डिवाइड 1 with 2, my epsilon m it will go upside and my epsilon naught it will come downside. ठीक है, और this q1 will cancel out with q1 q2 and r square it will cancel out with r square. यहां देखिए ये r square से cancel out हो गया q1 q2 से. ठीक है, तो अब चलिए लिख ही देते हैं एक बार. q1 q2 by r square divided by 4 q1 q2 by r square. ठीक है, तो अब आई एम लेफ्ट विद एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू epsilon m by epsilon naught into, yeah, so we will only be left with 1 by 4. ठीक है, तो अभी हमें फोर्सेस पता है. तो व्हेन आई केप्ट इट इन एयर इट वाज f, but when I kept it in medium it was f by 4. So it is equivalent to 1 by 4 and which is equivalent to relative permittivity. ठीक है, तो my f and f it will go cancel and this 4 it will multiply this side which will be equivalent to relative permittivity. So my relative permittivity for this medium it will be equivalent to 16. Perfect. So with this we will move on to our next very important numerical, which is very important from board point of view and which is also very important from the competitive point of view. What is said in this numerical is कि I have two pendulum charges. Pendulum charges का मतलब कि they are suspended from a fixed port and they are two equal charges. By equal I mean they have equal magnitude, right? So they are two equal charges. So firstly they are kept in air, okay, and when they are kept in air the angle between these two charges it is theta, okay, and now they are shifted into a medium. ठीक है, अब उन्हें क्या किया, उन्हें एक मीडियम में शिफ्ट कर दिया. पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी भी जो एंगल है उन दोनों के बीच में इट इज स्टिल थीटा. और व्हाट एल्स वी आर गिवन विद इज वी आर गिवन विद the density. So this is rho. I am representing density with rho. S means it is for the solid or the charges. It is 1.5 gram per cc. ठीक है, and this is again the density, but it is for it is for the medium. It is given to be 0.5 gram per cc. ठीक है, तो अब देखिए इस पे जो फोर्सेस हैं, सपोज दे आर इक्वल चार्जेस एंड लाइक चार्जेस, द फोर्सेस दे विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एक तो ये फोर्स होगी हमारे पास जो इस डायरेक्शन में इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और यहां से मान लीजिए वो अटैच है. और व्हाट एल्स आई कैन डू इज आई कैन ड्रॉ a line which passes through this, which passes exactly through the center. So in this case I have this angle theta by 2 and this angle it will again be theta by 2. Sorry, I have to use this, sorry.
it will be theta by 2, and this will again be theta by 2. I will try to select some other color. कोई है चॉइस आपका? तो अब देखिए, these are the forces which will be acting in this direction, and other I know that there will be a tension forces, क्योंकि अब देखिए वो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि you tie some mass with a thread and try to rotate it, तो आपके हाथ पे एक फोर्स फील होता होगा आपको. दैट इज व्हाट द टेंशन फोर्स इज, बिकॉज यू आर रोटेटिंग दैट मास. सर्कल में आप रोटेट कर रहे हैं. मान लीजिए आपने कोई भी किसी मास को एक रस्सी से बांध लिया विद ए थ्रेड, एंड यू आर ट्राइंग टू रोटेट इट ओवर योर हेड. तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट मास विल ट्राई टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, but you will also experience a force on your fingertip. That is what the tension force है. तो I represented by T. अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करूं, तो I have this angle. It will be, yeah. So this, sorry, it won't be this. It will be this. So I will try to raise it. So I have this, and this angle, it will be again theta by 2, because ये जो पर्पल लाइन है और जो रेड लाइन है which is passing exactly through the center, they are parallel lines, and this is the intersecting lines. So these are vertically opposite angles, so it will also be theta by 2. तो इससे हमें क्या पता चला? अगर हमने इसे theta by 2 लिख दिया, तो we come to know that अब टेंशन को अगर मैं 2 में स्प्लिट करूं, तो I will come to know that this component of tension, it will be T cos of theta by 2, and this component of tension, it will be, yes, you said it right, it is T sin theta by 2. ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्री विच वी अंडरस्टूड. और हाँ, हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट अगेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. हमें ये कैलकुलेट करना है. अगर मैं आपको कहूं कि आप फोर्सेस इक्वेट करके देखिए, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक बार जरा उन्हें देखिए. आप कहेंगे सर भी जो एफ फोर्स है, इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू टी साइन थीटा बाई 2. क्योंकि देखिए अब इनमें फोर्स लगना बंद हो गया है. दे आर एट ए स्टेबल पोजीशन. So I can say that force F, which is acting in outward direction, it is exactly equivalent and opposite to this component of the tension force. तो आप कहेंगे सर इसे रिकॉर्ड कर दीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए. और एक जो और चीज है, there will be one more thing which will be acting in the downward direction, that will be the weight of this charge. It will be mg. ठीक है, तो अब mg is exactly equivalent and opposite to this cosine component of t. So mg is equivalent to t cos theta by 2. So this is our equation 2, right? So I will say now divide 1 with 2. You will say we get an answer of F divided by mg. So now if we divide, so we have written these two equations. F, it is equivalent to t sine theta by 2 from this, and our in vertical direction mg is equivalent to t cos theta by 2. So if I divide 1 by 2, I get F divided by mg
it is equivalent to tan theta by 2. So this is the equation we got. तो हम इसे अभी यहीं रख लेते हैं थर्ड इक्वेशन को. अब थोड़ा मीडियम के बारे में देखिए, मीडियम क्या कह रहा. तो आई विल ट्राई टू रीड ऑल दिस. तो मीडियम के लिए भी हमें सेम यही करना है, बिकॉज आई फाइंड द स्पेस इट इज नॉट दैट सफिशिएंट, सो दैट इज व्हाई आई ट्राई टू रीड ऑल दिस. अब जब हमने मीडियम में शिफ्ट किया तो अब फिर से जो हमारा एंगल है इट इज अगेन थीटा. ठीक है, तो इट इज अगेन थीटा. नाउ इफ आई से यू कि बच्चों बताइए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाले चार्ज पे. आप कहेंगे सर अभी पहले तो लाइन ड्रॉ करिए सेंटर वाली, क्योंकि इट विल हेल्प अस. तो ये अगर सारा एंगल थीटा था तो this only angle it will be theta by 2, and similarly this angle it will be theta by 2. So now again I have a force which is F, I will call it as Fm. So Fm, ये वाला F नॉट था, चलो ये Fm है. And again I will, if I draw a parallel line in this direction, तो this angle it will again be theta by 2. ठीक है, तो अगर मैं अब फिर से कंपोनेंट देखें हम, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, और हाँ इस केस में जो टेंशन रहेगा इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू टी. इस केस में वी टेक टेंशन टू बी टी डैश, क्योंकि देखिए ना मीडियम में है, पहले इट वाज इन द एयर, सो टेंशन इट वाज डिफरेंट, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड इनटू ए मीडियम. सो नाउ द force which will be acting on the string it will be different, it will not be exactly same. तो थोड़ी एक ये बात समझिए, अब जो टेंशन स्ट्रिंग में है इट विल नॉट बी टी, इंस्टेड इट विल बी टी डैश. तो अब ये कंपोनेंट हो गया टी डैश थीटा बाय 2, एंड दिस इट विल बी टी डैश, आई विल राइट इट डाउन साइड, इट विल बी इक्वल टू टी डैश साइन थीटा बाय 2. और मास देखिए इसका, इट विल अगेन बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. अब एक और चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि बिकॉज ऑफ दिस मीडियम देयर विल बी सम अपवर्ड फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस, एंड इट विल बी द अपथ्रस्ट. ठीक है, और वो एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगी, बट इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो दिस इज द अपथ्रस्ट. अब मैं इफ आई नाउ आस्क यू to balance out the equations, you will say, sir, we have one Fm which is equivalent to t dash sine theta by 2, and then we have, अब vertical में ज़्यादा forces हैं अगर आप ध्यान से देखें, तो one is mg which is balanced out by t dash cos theta by 2 प्लस अपथ्रस्ट. ठीक है, तो अपथ्रस्ट देखिए ना इसी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा बाय 2 हमारा एक्ट कर रहा है, और अपथ्रस्ट भी सेम डायरेक्शन में है. सो दैट इज व्हाई इट विल बी एडिंग अप टू दिस. और ये दोनों मिलके किससे पंगा ले रहे हैं, दे आर बैलेंसिंग आउट मास, सॉरी द वेट. तो दैट इज व्हाई आई रोट इट लाइक दिस. पर अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे व्हाई आई एम मॉडिफाइंग दिस. आई एम जस्ट टेकिंग इट टू द लेफ्ट साइड, इट विल बी टी डैश cos theta by 2. Again, if I divide 4 with 5, what I will get is I will get Fm by mg minus upthrust, it is equivalent to tan theta by 2. आप कहेंगे सर ये tan theta by 2 थोड़ा नहीं जाना नहीं लग रहा.
यस, ये बिल्कुल जाना जाना है, क्योंकि हमारा थीटा जो एंगल है वो सेम है। तो अगर थीटा सेम है दोनों केसेस में, एयर और मीडियम में, तो थीटा बाय 2 विल आल्सो बी सेम। अगर थीटा बाय 2 विल आल्सो बी सेम, तो हमारा tan थीटा 2 बाय tan ऑफ थीटा बाय 2, it will also be same. It means we can equate equation 3 and 6. तो अगर मैं equation 3 देखूं, it was f by mg, it will be equivalent to fm by mg minus u. ठीक है, तो इस f को आप f नॉट भी देख लेते हैं, क्योंकि एज पर द नोमेनक्लेचर द फोर्स इन एयर और वैक्यूम इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय f नॉट। ठीक है, तो वी हैव दिस f नॉट बाय, अब हाउ आई कैन कन्वर्ट मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि हमें मास दे रखा है, तो इट विल बी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड into g, it will remain as it is, और इस साइड पे हमारे पास होगा fm डिवाइडेड बाय, अब ये तो सेम ही है, वेट ही है, इट विल अगेन बी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वेट ऑफ द सॉलिड इनटू g। पर जो हमारा अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द लिक्विड, सो इस केस में हमारा जो डेंसिटी होगा इट विल फॉर द लिक्विड, और वॉल्यूम हमारा सारे का सारा सॉलिड का ही होगा, क्योंकि सॉलिड इट इज कंप्लीटली समर्ज्ड विद इन द मीडियम। ठीक है, तो ये इस तरह से, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मीडियम है, आई एम पुटिंग ए मास इनटू इट, it will experience a upthrust in upward direction. So upthrust, it will be dependent on the density of the liquid in which I am putting it into the volume of solid. ये solid है हमारा, volume of the solid into g. तो इसीलिए I wrote density of the liquid here. ठीक है, तो अब मैं अगर इसे सॉल्व आउट करना चाहूं, f नॉट by rho s into vs, it will remain as it is. I cannot do anything about this right now. पर अगर मैं यहाँ पे हमारा vs and g कॉमन निकाल लूँ, I am left with density of the solid minus density of the liquid. ठीक है, you will say sir this will cancel out. So it means f naught by, or f naught by density of the solid. We already know, we are given that solid it has a density of 1.5 gram per cc, and liquid it has a density of 0.5 gram per cc. So I will put the density of solid here, it will be 1.5, and I will put Fm by density of the solid, it is 1.5 minus 0.5. तो it will be, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो this will come out to be 1. तो I have nothing left in the denominator. तो my F naught by Fm equivalent to 1.5. तो आप कहेंगे सर ये टर्म जो है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिटिविटी. तो इट मीन्स the relative permittivity of this medium, it is equivalent to 1.5. So this is the answer. So this was a numerical which was asked for IIT-JEE. So it is very important from that perspective. और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में तो ये हेल्पफुल है ही है. और एक दूसरी बात देखिए कि अब आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज इन द सेंस दैट दे कैन गिव यू लाइक the angle which they are making, it is 62 degree, even though it is same. जैसे अब आपने एयर में रखा तो एंगल जो है it is 62 degree. When you kept it in medium, again you have a angle of 62 degree. तो आपके ना एक बार you will be kind of tensed to know this kind of angles. तो आपको लगेगा how we can solve it in our competitive exam. But अगर आप देखें तो एंगल का तो इफेक्ट आ ही नहीं रहा,
एंगल हैज नथिंग टू डू विद इट. एंगल की वजह से तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, बिकॉज एंगल टर्म इज ऑलवेज गेटिंग कैंसल्ड आउट. तो फॉर एनी न्यूमेरिकल you can be less worried about the angles and you can start solving it as it is. So this is how we actually approach in this kind of numericals. ठीक है, तो this is the answer which we got. So we have a relative permittivity for a medium which is 1.5 times that for the air. और ये चीज़ आप बड़ी एक ज़रूरी याद रखिएगा, because it will be helpful to you for so many times. ठीक है, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमारी जो फोर्स इन एनी मीडियम है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी. अगर आप ये चीज भी याद कर लेंगे, इजिली यू कैन मेक आउट दिस फ्रॉम दिस. सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और इंजॉय, और साथ के साथ आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. तो इसी तरह से ढेरों और वीडियोस के साथ आएंगे. वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. वी विल कवर ऑल द +2 एंड वी विल आल्सो कवर ऑल ऑफ द +1. और सिर्फ बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से नहीं, वी विल आल्सो कवर इट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. So because of that, I with this I will also humbly request you to kindly like our channel and to subscribe our channel if you have not done it yet. We will be immensely thankful to you, and we surely will bring a good content for you in the near future. Thank you. Thanks a lot.